Chapter 4 Essay 500 Audit Evidence. तो ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द conclusions on which the auditor's opinion is based. It includes both information contained in the accounting records underlining the financial statements or other information. So, audit evidence is the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. It includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information. What is included in accounting records? So information contained in accounting records, that are accounting records, includes records of initial accounting entries and supporting records such as tax, records of electronic fund transfer. So records of initial accounting entries and supporting records, initial accounting entries and supporting records, records of initial accounting entries and supporting records such as checks and records of electronic fund transfers, invoices, contracts, records of initial accounting entries and supporting records, 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 such as checks and records of electronic fund transfer. So, initial accounting entries or supporting records such as checks and records of electronic fund transfer, then invoices, contracts, general and subsidiary ledgers, general entries, and other adjustment to the financial statements that are not reflected in the general entries. So, general and subsidiary ledgers, general entries, and other adjustment to the financial statement that are not reflected in general entries. So, general and subsidiary ledgers, journal entries, and other adjustments to the financial statements that are not reflected in journal entries. Records such as worksheet, spreadsheet, supporting cost allocations, computations, reconciliations, and disclosures. So, general and subsidiary ledger, general entries, and other adjustment to the financial statement, general entries, and other adjustment to the financial statement that are not reflected in the general entries. Records such as worksheet, spreadsheet, cost supporting cost allocations, computation, reconciliation, and disclosure. So, four records of initial and accounting entries and supporting records such as tax and records of electronic fund transfer, invoices, contracts. Then we have general and subsidiary ledger, general entries, and other adjustments to the financial statement that are not reflected in general entries. Worksheets, records such as worksheet, spreadsheet, supporting cost allocations, computations, reconciliations, and disclosures. Other information that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of the financial statements. Other information which the auditor may use as audit evidence includes minutes of the meetings, manuals containing details of internal control, and written confirmation from trade receivables and trade payables. तो ऑथेंटिकेट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को और सपोर्ट करता है ऑडिटर का रैशनली बिहाइंड द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिटन confirmation from trade receivable and payable, and then we have manual containing details of internal control. Types of audit evidence depending upon nature and depending upon source. तो nature के basis पे we have visual, oral and documentary, and on source we have internal and external. तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर विजुअल मतलब ऑब्जर्व करना फिजिकल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द क्लाइंट स्टाफ, ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द क्लाइंट स्टाफ, एंड डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट. Discussion with the management and various officers of the client. Discussion with the management and various officer of the client. Documentary, fixed deposit certificate, loan agreement, sales bill, etc. Fixed deposit certificate, loan agreement, sales bills, etc. Documentary. Now, depending upon source, we have internal evidence and external evidence. In internal evidence, evidence which originates Evidence which originates within the organization being audited is internal evidence. Sales invoice, copies of sales challan and forwarding notes,
sales invoice, copies of sales challan and forwarding notes, goods received note, inspection report, copies of cash memo, debit and credit notes, etc. So goods received note, debit and credit note, sales invoice, copies of sales one, forwarding notes, inspection report, and copies of cash memo. Evidence which originates within the organization being audited is internal evidence. Sales invoice, copies of sales journal and forwarding note, inspection report, good received note, copies of cash memo, debit and credit notes, etc. Are the example of internal evidence. Then external evidence, evidence which originates outside the client's organization. External evidence is more reliable and internal evidence is less reliable. Example of external evidence: purchase invoice, suppliers, challan, and forwarding note, debit and credit note, notes that coming from parties, quotations, confirmations, etc. So purchase invoice, suppliers, challan, and forwarding note, purchase invoice, suppliers, challan, and forwarding note, debit and credit notes, notes coming from parties, quotations, confirmations, etc. Purchase invoice, suppliers, challahs, and forwarding note, debit and credit notes, notes coming from parties, quotations, confirmations, etc. Now, in an audit situation, the bulk of evidence that an auditor gets is internal in nature. Audit situation, bulk of evidence जो auditor को मिलता है वो internal होता है nature में. However, substantial external evidence is also available to the auditor. Since in the origination of internal evidence, the client and the staff have the control in an audit situation, the bulk of evidence that auditor gets is internal in nature. However, substantial external evidence is also available to the auditor. Since in the origination of internal evidence, the client and his staff have the control, the auditor should be careful in putting reliance on such evidence. It is not suggested that they are to be expected, but an auditor has to be alive to the possibilities of manipulation. But the client and have the control, so the auditor should be careful in putting reliance on such evidence. It is not suggested that they are to be suspected, but an auditor has to be alive to the possibilities of manipulation या फिर creation of false या misleading evidence to suit the client or his staff. External evidence जो है generally more reliable होता है क्योंकि वो third parties से आता है who are not normally interested in manipulation of the accounting information of others. Okay, obviously third parties would not be interested. So, the external evidence is generally considered to be more reliable as they come from third parties who are not normally interested in manipulation of the accounting information of others. However, if the auditor has any reason to doubt the independence of any third party who's provided any material evidence, example, an invoice of an associated concern, he should exercise greater vigilance in that matter. अगर ऑडिटर के पास कोई भी रीज़न है डाउट करना इंडिपेंडेंस थर्ड पार्टी की तो हु हैज़ प्रोवाइडेड इन मटेरियल एविडेंस दैट इज इनवॉइस ऑफ एन एसोसिएटेड कंसर्न तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए ग्रेटर विजिलेंस उस मैटर में मतलब ग्रेटर केयर ग्रेटर फोकस वी कैन से As an auditing rule, the auditor should try to match internal and external evidence as far as practicable. Where external evidence is not readily available to match, the auditor should see as to the extent various. An audit team member of the general limit of the view that audit. Now, relevance and reliability. The auditor has to express opinion on the truth and fairness on the financial statement. He shall consider the relevance and reliability of the information to be used as audit evidence. The quality of all audit evidence is affected by the relevance and reliability of the information which is based. Relevance deals with the logical connection which bearing upon the purpose of the audit procedure and where appropriate the assertion under consideration. The relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing. The reliability of information is to be used as audit evidence, and therefore of the evidence itself is influenced by its source and nature, and the circumstances under which it is obtained influenced hota hai by source and nature and the uh, circumstances under which it is obtained, including the control over its preparation and maintenance where relevant.
सो रिलेवेंस जो है डील करता है विद द लॉजिकल कनेक्शन bearing upon the purpose of the audit procedure and where appropriate the assertion under consideration. The information to be used as audit evidence is in the relevance of information to be used as audit evidence may be affected by direction of testing. The reliability of information to be used as audit evidence, therefore, of the audit evidence itself is influenced by source, nature, influenced by its source and nature, the circumstances under which it is obtained, includes a control over its preparation and maintenance. Include करता है control over its preparation and maintenance. Example of relevance. So, if the purpose of an audit procedure is to test the overstatement in the existence or valuation of account payable, testing the recorded accounts payables may be a relevant audit procedure. तो अगर पर्पस है ऑडिट प्रोसीजर का टेस्ट करना ओवर स्टेटमेंट या फिर वैल्यूएशन अकाउंट्स पेबल की ओवर स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस में ओवर स्टेटमेंट या फिर वैल्यूएशन अकाउंट्स पेबल की तो फिर टेस्ट करना रिकॉर्डेड अकाउंट पेबल्स एक फिर रिकॉर्डेड अकाउंट पेबल को जो है टेस्ट करना रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर होगा लेकिन अगर अंडर स्टेटमेंट बट जब हम अंडर स्टेटमेंट इन द एग्जिस्टेंस या फिर वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेबल को टेस्ट करते हैं तो रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल रिलेवेंट नहीं होंगे बट टेस्टिंग सच इन्फॉर्मेशन एट सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट्स अनपेड इनवॉइसेस सप्लायर स्टेटमेंट्स एंड अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स मे बी रिलेवेंट so would not be relevant but testing such information at subsequent disbursements unpaid invoices supplier statements and unmatched receiving reports may be relevant. Subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statements, and unmatched receiving reports may be relevant. A given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant for certain assertion but not others. अब एक given set of audit procedure जो provide करता है audit evidence वो relevant हो सकता है certain assertion के लिए but not others. For example, inspection of documents relating to the collection of receivables after the period end may provide audit evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off. To inspection of documents related to the inspection of documents related to the collection of receivables, inspection of documents related to the collection of receivables after the period and may provide audit evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off. Similarly, obtaining audit evidence regarding a particular session, for example, the existence of inventory, is not a substitute for obtaining audit evidence regarding another assertion, for example, the valuation of that inventory. On the other hand, audit evidence from different sources or of a different nature may often be relevant to the same assertion. Audit evidence from different sources or of a different nature may often be relevant to the same assertion. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है डिज़ाइन किए जाते हैं evaluate करने के लिए ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग करेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट एज assertion level. So, test of controls are designed to evaluate the operating effectiveness of the controls in preventing, detecting, or correcting and correcting material misstatement assertion level. Design करना test of controls को to obtain relevant audit evidence include करता है identifying conditions, characteristics और attributes जो indicate करता है performance एक control की deviation conditions में जो indicate करता है departures from adequate performance. The presence or absence of those conditions can be tested by the auditor. So, designing test of controls to obtain relevant audit evidence include identifying conditions. Design करना test of controls को obtain करने के लिए relevant audit evidence include करता है identifying conditions, characteristics or that is characteristics or attributes जो indicate करता है performance of a control, deviation in condition which indicate departures from adequate performance. Designing tests of controls to obtain relevant audit evidence includes identifying conditions, characteristics, or attributes that indicates performance of a control and deviation in conditions which indicate departures from adequate performance. The presence or absence of those conditions can be tested by the auditor.
सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है डिज़ाइन किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल. दे कंप्राइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. Substantive procedures are designed to detect material misstatements at the assertion level. Substantive procedures जो है डिज़ाइन किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट assertion लेवल पे. वो कंप्राइज करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. They comprise test of details, substantive analytical procedures. Designing substantive procedures जो है include करता है identifying conditions relevant to the purpose of the test that constitute a misstatement in the relevant assertion. तो substantive procedures जो है डिज़ाइन किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल. वो कंप्राइज करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स इन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को चेक करने के लिए इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल. और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो डिज़ाइन करे जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल. वो कंप्राइज करते हैं ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. डिजाइनिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इंक्लूड आइडेंटिफाइंग कंडीशंस रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट that constitute a misstatement in the relevant assertion. Information to be used as audit evidence should be reliable. Reliability of information to be used. Reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence it. Reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source and natures and circumstances under which it is obtained, include the control over its preparation and maintenance where relevant. Reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source and its nature and the circumstances under which it is obtained. Influence होता है by source और nature और circumstances under which जो वो है obtain हुआ है. तो therefore generalizations about the reliability. तो generalizations क्या है? Therefore, generalizations about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. Even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. तो जनरलाइजेशंस की जो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो इंक्रीज हो जाती है जब वो ऑब्टेन हुआ होता है फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी. इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी. Reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity. Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those controls over the preparation. तो जो इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है जब वो ऑब्टेन्ड हो फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज या फिर रिलेटेड कंट्रोल्स जो है इफेक्टिव हो, ऑब्टेन्ड हो डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ऑब्टेन्ड हो इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म या फिर प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. The reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity. Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. Audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. For example, inquiry about the application of a control. Audit evidence in documentary form, whether paper, electronic, or other medium, is more reliable than evidence obtained orally. For example, a contemporaneously written record of a meeting is more reliable than a subsequent oral representation of the matter discussed. Audit evidence obtained as original documents is more reliable than audit evidence as obtained as photocopies or facsimiles or documents that have been filmed, digitized, or otherwise transformed into electronic form, because in these cases the reliability of which may depend on the controls over their preparation and maintenance.
Audit evidence obtained as original documents more reliable. तो increase हो जाता है when obtained from independent sources, related controls are effective, obtained directly by the auditor, obtained in documentary form provided by original documents. So, auditor has to obtain sufficient appropriate audit evidence. तो ऑडिटर को जो है obtain करना है sufficient appropriate audit evidence draw करने के लिए reasonable conclusions financial statements में, और sufficiency and appropriateness जो है interrelated होता है, sufficiency quantity and appropriateness quality. No, sufficiency and appropriateness of audit evidence are interrelated. Sufficiency और appropriateness of audit evidence जो है interrelated है. Sufficiency जो है measure है of quantity of audit evidence. Sufficiency is the measure of the quantity of audit evidence. Quantity of audit evidence is needed. Uh, Quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of the risk of misstatement. The higher the assessed risk, the more audit evidence is likely to be required, and also by the quality of such audit evidence. The higher the quality, the less may be required. The quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of the risk of misstatement. The higher the assessed risk, the more audit evidence is likely to be required, and also by the quality of such audit evidence. The higher the quality, the less may be required. Sufficiency is the measure of the quantity of audit evidence. Appropriateness is the measure of quality of audit evidence. Appropriateness is the measure of quality of audit evidence. Its relevance and its reliability in providing support for the conclusions on which the auditor's opinion is based. Its relevance and its reliability in providing support for the conclusion on which the auditor's opinion is based. The reliability of audit evidence is influenced by its source, nature, and is dependent on the individual circumstances under which it is obtained. The auditor The auditor shall design obtaining sufficient and appropriate audit evidence by the auditor. तो ऑडिटर को जो है डिजाइन और परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस में फॉर द पर्पस ऑफ obtaining sufficient and appropriate audit evidence. Audit evidence जो है necessary है to support the auditor's opinion and report. It is cumulative in nature and is primarily obtained from audit procedures performed during the course of the audit. ये जो है cumulative है नेचर में or primarily obtained there from audit procedures performed during the course of the audit. Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and report. It is cumulative in nature and primarily obtained from audit procedures performed during the course of the audit. It may, however, also include information obtained from other sources such as previous audits. Include करता है information जो obtained है from other sources such as previous audits. In addition to those sources inside and outside the entity's accounting resource records are an important source of audit evidence. Entity के accounting records जो है important source of audit evidence. Also, information that may be used as audit evidence may have been prepared using the work of a management expert. Information जो used as audit evidence वो prepared है using the work of a management expert. अब audit evidence जो है comprise करता है both information जो support and corroborate करती है management की assertion और any other information जो contradict करती है such information कुछ support और corroborative भी और जो contradict करती है वो assertions भी. So, in addition, in some cases, absence of information, for example, management ka refusal to provide the requested representation, is used by the auditor and therefore also constitutes audit evidence. तो absence of information में जब management जो है refuse कर देती है information provide करने से तो वो भी एक audit evidence होता है. ठीक है तो मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ obtaining and evaluating audit evidence. The auditor uses various audit procedures to obtain evidence such as inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, analytical procedures. तो inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance ये procedures जो auditor use करता है often in some combination in addition to inquiry. So, reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk. There is a risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated to acceptably low level. ऐसे 330 जो require करता है auditor को
conclude करने में whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained to reduce audit risk to an acceptably low level and enable the auditor to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion is a matter of professional judgment. अब ऐसे 200 जो है कंटेन करता है डिस्कशन ऑफ सच मैटर्स एज द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंटेन करता है डिस्कशन सच मैटर्स का, जैसे कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फैक्टर्स when the auditor exercise professional judgment regarding where sufficient and appropriate audit evidence has been obtained. Discussion of such matters such as timeliness of financial reporting, nature of audit procedures, balance between benefit and cost, nature of audit procedure, timeliness of financial reporting, relevant factors है when the auditor जो है exercise करता है professional judgment regarding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. There was a partnership form of chartered accountants, VM and Associates. Mr. M, one of the partners of VM and Associates, while explaining to his audit team members about the importance of audit evidence, informed them about sufficiency and appropriateness of audit evidence. Mr. A, one of the members of audit team of VM and Associates, सफिशिएंसी जो है 3 फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब 3 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, दैट इज़ मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो मटेरियलिटी जो है डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस assertions are less material to the users of the financial statement, but more define the significance of ABCD, that is classes of transaction, account balance, and presentation and disclosure to the users of financial statement. और less evidence जब required होगा in the assertion जब less material है to users of the financial statement, but more material जब more material होगा तो more evidence required होगा. Risk of material misstatement to defined as a risk that a financial statement are material misstated prior to the audit. This consists of two components described as follows at the assertion level. Inherent risk, that is susceptibility of an assertion to a misstatement, susceptibility एक assertion की to a misstatement that could be material before consideration of any related controls. या risk that a misstatement that could occur in an assertion that could be material will not be prevented, detected and corrected on a timely basis by the entity's internal control. साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन रेफर करता है नंबर ऑफ आइटम्स जो इंक्लूडेड है एक पॉपुलेशन में. लेस एविडेंस जो है रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ स्मॉलर मोर होमोजीनियस पॉपुलेशन, बट मोर एविडेंस जो रिक्वायर होगा इन केस ऑफ मोर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, मोर एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड. Now, source of audit evidence. So, some audit evidence जो है obtained है by performing audit procedures to test the accounting records. Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records, जैसे कि through analyze and review, reperforming procedures followed in the financial reporting process. रीपरफॉर्म करना प्रोसीजर्स को जो फॉलोड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, रीपरफॉर्म करना प्रोसीजर्स जो फॉलोड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में, reperforming procedures followed in the financial reporting process, reperform procedures followed in the financial reporting process, reperforming procedures followed in the financial reporting process, uh, through analyze and review. Some audit evidence are obtained by performing audit procedures to test the accounting records. Some audit evidence जो है obtained है by performing audit procedures to test the accounting records. Through analysis and review, reperforming करना procedures जो followed है in the financial reporting process, reconciling related types and applications of the same information, reconcile करना related types को और applications को of the same information, reconciling related types and applications of the same information, reperform करना procedures जो followed है in the financial reporting process through analysis and review. Source of audit evidence through analysis and review, reperform करना procedures followed in the financial reporting process और reconcile करना related types and applications of the same information.
जैसे कि एनालाइज और रिव्यू या फिर रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स फॉलोड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस या reconciling related types and applications of the same information. Up through the performance of such audit procedure, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. अब थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोसीजर ऑडिटर जो है डिटरमाइन करेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है इंटरनली कंसिस्टेंट एंड एग्री करते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मोर अश्योरेंस इज ऑर्डिनरली obtained from consistent audit evidence. More assurance जो है ordinarily obtained है from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature that from items of audit evidence considered individually. Collaborating information obtained from a source Corroborating information obtained from a source independent of the entity may increase the assurance the auditor obtained from audit evidence that is generated internally. तो corroborate करना information जो obtain है from a source independent of the entity. Corroborating information obtained from a source independent of the entity may increase the assurance, may increase करेगा assurance. The auditor obtains from audit evidence and is generated internally, such as evidence existing when the accounting records, minutes of meetings, or a written or a information from sources independent of the entity auditor may use or audit evidence include करता है confirmation third party से analyst की reports और comparable data about competitors. तो comparable data about competitors, analyst reports and confirmation from third party. Confirmation third party से analyst की reports, comparable data about competitors. Comparable data about competitors, confirmation from third party and analyst report. Confirmation from third party analyst report and comparable data about competitors. Confirmation third party से analyst की reports और comparable data about competitors. तो audit procedures for obtaining audit evidence. Audit evidence to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion is obtained by performing risk assessment procedures and further audit procedures जो comprise करते हैं of test of controls when required by the essays or when the auditors has chosen to do so. Test of controls should required by the essays when required by the essays or when the auditor has chosen to do so. फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए रोम में फर्दर प्रोसीजर्स जैसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो इंक्लूड करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में यूज़ किए जाते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑडिट प्रोसीजर जैसे कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. नाउ वी हैव इंस्पेक्शन. तो इंस्पेक्शन जो है इन्वॉल्व करता है एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इंटरनल या एक्सटर्नल पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में या अदर मीडिया में या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन ऐसे. तो एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म और एनी अदर मीडिया इंटरनल और एक्सटर्नल और या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन एसेट का. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर nature and source and in the case of internal records and documents on the effectiveness of the controls over their production. तो depend order evidence vary करता है degree of variability depending on their nature and source, and in case of internal records and documents on the effectiveness of the controls over the production, effectiveness of controls over their production. या फिर example of inspection जो है used as a test of control is inspection of records for evidence of authorization. Example of inspection used as a control in example inspection का जो used है as a test of control जो है inspection है of records for evidence of authorization. Inspection of records, inspection of records, inspection of records for evidence of authorization. 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 एग्जाम्पल है इंस्पेक्शन का जो यूज है एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है इंस्पेक्शन है रिकॉर्ड्स का फॉर एविडेंस ऑफ अथोराइजेशन. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ अथोराइजेशन. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड
फॉर एविडेंस ऑफ अथराइजेशन, सम डॉक्यूमेंट्स जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट जो कंस्टिट्यूट करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ स्टॉक और बॉन्ड। सम डॉक्यूमेंट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस, सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, of the existence of an asset. Some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset. For example, a document constituting a financial instrument such as a stock or bond. Inspection of such documents may not necessarily provide audit evidence about ownership or value. Inspection of such documents जो है necessarily provide नहीं करता audit evidence about ownership या value. In addition, inspecting an executed contract, inspect करना एक executed contract जो है provide करता है provide audit evidence relevant to the entity का application of accounting policies such as revenue recognition. तो inspecting an executed contract जो है provide करता है audit evidence जो relevant है to the entity का application of accounting policies such as revenue recognition. इंस्पेक्शन टेंजिबल एसेट्स की जो है प्रोवाइड करती है रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्जिस्टेंस। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्जिस्टेंस बट नॉट नेसेसरीली अबाउट द एंटिटी का राइट एंड ऑब्लिगेशन और द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, बट नॉट नेसेसरी अबाउट द एंटिटी का राइट एंड ऑब्लिगेशन या फिर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स जो है इंकम्पनी करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? लुकिंग एट द प्रोसेस परफॉर्म बाय अदर्स, looking at the process or procedure being performed by others, looking at the process or procedure being performed by others, जैसे कि observation of inventory counting by the entity का personnel और the performance of control activities। तो observation जो है provide करता है audit evidence about the performance of a process or procedures but is limited to the point in time at which the observation take place and by the fact that the act of being observed may affect how the process or procedures is performed। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है रिप्रेजेंट करता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। मतलब डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स की तरह जो है ऑडिटर को मिला है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी, द कंफर्मिंग पार्टी। थर्ड पार्टी को कंफर्मिंग पार्टी बोलते हैं। जो एविडेंस मिला पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या कोई और मीडियम में। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है फ्रीक्वेंटली रिलेवेंट है व्हेन एड्रेसिंग assertion associated with certain account balance and their elements. However, external confirmations need not to be restricted to account balances only. अब ऑडिटर जो है रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शंस एन एंटिटी हैज विद थर्ड पार्टीज। द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मे बी डिजाइन टू आस्क इफ एनी modifications have been made to the agreement and if so what the relevant details are। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स जो है यूज किए जाते हैं एज ऑडिट एविडेंस अबाउट द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि एब्सेंस ऑफ साइड एग्रीमेंट दैट जो इन्फ्लुएंस करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, इन्फ्लुएंस कर सकता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को। And revenue recognition, recalculation का मतलब चेक करना मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। और रिकैलकुलेशन जो है परफॉर्म्ड मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। तो रिकैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स और रिकैलकुलेशन जो है परफॉर्म्ड मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। री परफॉर्मेंस जो इंक्लूड इन्वॉल्व करता है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। तो री परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व करता है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ कंट्रोल्स that were originally performed as part of the entity's internal control, that were originally performed as part of the entity का internal control। री परफॉर्मेंस जो है इंक्लूड इन्वॉल्व करता है
ये परफॉर्मेंस जो है इन्वॉल्व करता है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन प्रोसीजर्स का या कंट्रोल्स का जो ओरिजिनली परफॉर्म्ड है एज पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, एज पार्ट ऑफ द एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। री परफॉर्मेंस जो है इन्वॉल्व करता है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटी का internal control. Re-performance involves the independent execution of the procedures or controls that were originally performed as part of the entity का internal control. Re-perform करना reconciliation of bank statement, re-perform करना aging of account receivables. तो aging account receivables की या reconciliation bank statement का re-performance का example है. Now, analytical procedures जो है consist करते हैं information of financial information made by a study of plausible relationship among both financial and non-financial data. तो analytical procedures consist of evaluation of financial information by study of plausible relationship among both financial and non-financial data. तो analytical procedures जो है consist करते हैं evaluation of financial information made by a study of plausible relationships among both financial and non-financial data. Analytical procedure also encompass करता है investigation of identified fluctuations या relationships या फिर relationships जो sorry इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस की और या फिर रिलेशनशिप्स जो इनकंसिस्टेंट है विद द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या फिर डेविएट करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रिडिक्टेड अमाउंट। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन रिलेशनशिप्स जो इनकंसिस्टेंट है विद अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या डेविएट करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रिडिक्टेड अमाउंट। नाउ इंक्वायरी, इंक्वायरी जो है कंसिस्ट करता है ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी या आउटसाइड द एंटिटी। सीक करना इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन की इंटरनल सॉरी बोथ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ knowledgeable persons both financial और नॉन फाइनेंशियल within the entity और outside the entity. इंक्वायरी जो है यूज़ की जाती है एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट. इंक्वायरी इज़ यूज extensively throughout the audit in addition to other audit procedures. Inquiry is used extensively throughout the audit in addition to other audit procedures. Inquiry is used extensively throughout the audit in addition to other audit procedures. Seeking information of knowledgeable persons, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity, used extensively throughout the audit in addition to other audit procedures. इंक्वायरी जो है अरेंज कर सकती है फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज या फिर इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज पे. इवेलुएट करना रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज जो है इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस. Evaluating responses to inquiry is an integral part of the inquiry process. अब रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज जो है प्रोवाइड कर सकता है ऑडिटर को विद इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड और कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस या अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन जो डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन. इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियसली पोजेस नहीं है, या कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस या रिस्पॉन्सेज जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन दैट सिफर सिग्निफिकेंटली कोलैबोरेटिव या फिर नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड या रिस्पॉन्सेज जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन डिफर करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर्स ऑब्टेन. For example, information regarding the possibility of management override of controls, information regarding the possibility of management override of controls, management का override of control की possibility, या some cases में responses to inquiries जो provide करते हैं basis for the auditor to modify or perform additional audit procedures. Responses to inquiries जो provide करते हैं basis for the auditor to modify and perform additional audit procedures. Although corroboration of audit evidence obtained through inquiries is often of particular importance in case of inquiries about management intent, the information available to support management intent may be limited. In these cases, understanding management का past history of carrying out its intention, management's reason for choosing a particular course of action, and management
की एबिलिटी, तो मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, management's past history of carrying out its stated intentions, management's past history of carrying out its stated intentions, management stated reasons for choosing a particular course of action, and management की ability to pursue a specific course of action, जो है प्रोवाइड करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेट करने के लिए एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी। तो अंडरस्टैंड करना मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री फॉर कैरिंग आउट इट स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट पास्ट हिस्ट्री फॉर कैरिंग आउट इट स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट स्टेटेड रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड मैनेजमेंट का एबिलिटी टू परस्यू अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन जो है प्रोवाइड करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेट करने के लिए एविडेंस जो ऑब्टेन्ड हुआ है थ्रू इंक्वायरी। तो अंडरस्टैंड करना मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री फॉर कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशन, मैनेजमेंट का स्टेटेड रीजन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट का स्टेटेड रीजन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस। अंडरस्टैंड करना मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, एंड अंडरस्टैंड करना मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस, मैनेजमेंट का स्टेटेड रीजन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन में प्रोवाइड कर सकता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेट करने के लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सम मैटर्स द ऑडिटर may consider it necessary to obtain written representation from management, and where appropriate those charged with governments to confirm responses to oral inquiries. अब ऑल्दो इंक्वायरी जो है प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस एंड मे इवन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ अ मिस स्टेटमेंट, इंक्वायरी अलोन ordinarily does not provide sufficient audit evidence of the absence of a material misstatement at the assertion level, not the operating nor of the operating effectiveness of controls. Following procedures are also relevant in respect of audit procedures for auditor का consideration. The audit procedures, inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, analytical procedure, often in some combination in addition to inquiries, may be used as risk assessment procedures, test of controls, or substantive procedures depending on the context in which they were applied by the auditor. Audit evidence obtained from previous audits may, in certain circumstances, provide audit evidence appropriate where the auditor performs audit procedures to establish its continuing relevance. Nature and timing of the audit procedures. The nature and timing of the audit procedure to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electric form or only at certain points or period in time. Source documents such as purchase orders, अब जो कुछ इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर सर्टेन पॉइंट या पीरियड इन टाइम में ही प्रेजेंट होगी, जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि परचेज ऑर्डर इनवॉइसेस में एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रिक फॉर्म व्हेन एंटिटी यूजेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग व्हेन द एंटिटी इज यूजिंग image processing systems to facilitate storage and reference. Now, certain electronic information may not be retrievable after a specified period of time. For example, files जो है changed है and if backup files do not exist, accordingly the auditor may find it necessary as a result of an entity's data retention policies to request retention of some information for the auditor's review or to perform audit procedures at a time when the information is available. At this stage, it would be further pertinent to discuss the concept of risk assessment procedure and further audit procedure. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है ऑडिट प्रोसीजर है रेफर किया जाता है ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म होता है ऑब्टेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटी कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और द एरर। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है कंप्राइज करते हैं ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एसएस और व्हेन द ऑडिटर हैज चोजन टू डू सो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो इंक्लूड करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिफाइन किया जाता है और डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टू डिटेक्ट इन प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल पे।
ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है डिज़ाइन किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए वो मटेरियल में स्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल जो कंप्राइज करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कंप्राइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डिजाइनिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स includes identifying conditions relevant to the purpose of the test that constitute a misstatement the relevant assertion. Substantive procedure to define किया जाता है as the audit procedure designed to detect material misstatement at the assertion level. ये चार्ट दे रखा है हमको कि टेस्ट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फिर अदर प्रोसीजर्स अदर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंस टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में वेरिफिकेशन। नाउ असर्शंस क्या है? असर्शंस जो है रिप्रेजेंटेशन है बाय मैनेजमेंट इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट और अदरवाइज रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट explicit or otherwise that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur. Representations by management that explicit or otherwise that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements. When representing that the financial statements are in accordance with the applicable financial reporting framework, management implicitly or explicitly make assertions regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of the various elements of financial statements and related disclosures. Assertion जो है यूज बाय द ऑडिटर है कंसिडर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जो अकर करते हैं फॉल करते हैं इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज एंड मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन OCC ACC अकाउंट बैलेंस ERCV एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर OCCA. So classes of transactions and events may occurrence, completeness, accuracy, cutoff, classification. Then we have account balance in which we have existing rights and obligations, completeness and valuation. And then we have presentation and disclosure, occurrence, rights and obligations, completeness, classification and understandability, accuracy and valuation. Assertions about classes of transactions and events for the period under audit. तो occurrence जो है transaction events है जो have been recorded and have occurred and pertain to the entity. Occurrence transactions and events that have been recorded and have occurred and pertain to the entity. Completeness all transactions and events should have been recorded have been recorded. Amounts या other data जो recorded हुआ है relating to recorded transactions or events have been recorded appropriately is accuracy. कट ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्लासिफिकेशन प्रॉपर अकाउंट्स में जब वो रिकॉर्ड हुए हैं। अब assertions अबाउट अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड तो एग्जिस्टेंस एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी का इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन में एंटिटी होल्ड और कंट्रोल करती है राइट टू एसेट। लाइबिलिटीज जो है ऑब्लिगेशंस है ऑफ द एंटिटी और होल्ड और कंट्रोल करती है राइट टू एसेट्स। कंप्लीटनेस ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। Valuation or allocation में assets, liabilities and equity interests are included in the financial statement at the appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded. Assets, liability और equity का interest जो है included in the financial statements at appropriate accounts amounts and any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded. Now assertions about presentation and disclosure. तो occurrence, right and obligations, disclosed events, transaction या other matters जो occurred है pertain करता है to the entity, completeness में all disclosures that should have been included in the financial statement have been included. Classification और understandability में financial information जो appropriately presented or described है वो clearly expressed है. Accuracy and valuation में disclosed fairly और appropriate amounts में.
Now, the auditor may use the assertions as described above or may express them differently provided all aspects described above have been covered. For example, the auditor may choose to combine the assertions about transactions and events with the assertions about account balance. When making assertions about the financial statements of certain entities, especially for example when the government जो है एक major stakeholder है, in addition to those assertions set out in paragraph 2, management may often assert that transactions and events have been carried out in accordance with legislation or proper authority. Such assertions may fall within the scope of the financial statement audit. Let us elaborate with this with the help of two illustrations. We must clearly understand that each item contained in financial statements asserts something to the readers of the accounts to indicate the ownership, existence, quantity of various things, etc. Auditing is concerned with the testing of the authenticity of the information thus conveyed. Now, when we find in the balance sheet an item under current assets regarding as cash in at 10,000, the obvious solution that would strike the mind are the following. The firm concerned had 10,000 handed valid notes and coins on the balance sheet date, cash to have free and available for expenditure to the firm, that the books of accounts show a balance of identical amounts at the end of the day on which the balance sheet is drawn up. So plant and machinery, less depreciation. If the firm owns the plant and machinery, historical costs like physically exist, utilized in the business of the company. Total charge of depreciation on this asset is ठीक है. नेगेटिव assertions जो है एनकाउंटर्ड होते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेम जो है एक्सप्रेस जो इम्प्लाइड होते हैं जैसे कि इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर इज नो कंटीजेंट लायबिलिटी इट वुड बी एक्सप्रेस नेगेटिव assertion. अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है तो नेगेटिव assertion. On the other end of the balance sheet there is no item building, it would be an implied negative assertion. The entity did not own any building on the balance sheet date. Every financial statement contains overall representation in addition to the specific assertions as far discussed. Each financial statement purports to present the something as a whole in addition to its component details. For example, an income purports to present the results of operations, balance sheet purports to present financial position. Auditor opinion is typically directed to these overall representations, but to formulate and offer an opinion on the overall truth of the statements as to inquire into the truth. Now, audit trail. अब ऑडिट ट्रेल जो है एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो या ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट करता है हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इन अकाउंटिंग एंट्री एंड फ्रॉम देयर इट वाज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फ्रॉम देयर इट वाज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ट्रांजैक्शन हाउ इन्वेस्टिगेट करता है हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू an account entry and then there it was inserted into financial statement of entity. यूज़ किया जाता है एज ऑडिट एविडेंस एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ किया जाता है ऑडिट एविडेंस टू इस्टेब्लिश करने के लिए ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी एक ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी एक ट्रांजैक्शन की. ऑडिट ट्रेल हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूज़र एक्टिविटी. ऑडिट ट्रेल जो हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूज़र एक्टिविटी. ऑडिट ट्रेल हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम और यूज़र एक्टिविटी. ऑडिट ट्रेल जो हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड सिस्टम का और यूज़र एक्टिविटी. लाइक इन केस ऑफ बैंक देयर इज एन ऑडिट ट्रेल कीपिंग ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी डिटेलिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉग ऑन अटेम्प्ट्स एंड डिवाइस यूज. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड. ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिससे अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स या अदर फाइनेंशियल डेटा जो है ट्रेस किया जाता है टू देयर सोर्स. It is a step by step record by which accounting, trade details या other financial data जो है trace किया जाता है to their source. Step by step record by which accounting, trade details and other financial data can be traced through their source. ऑडिट ट्रेल्स है यूज़ की जाती है वेरीफाई और ट्रैक करने के लिए मैनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिससे अकाउंटिंग और ट्रेड डिटेल या द फाइनेंशियल डेटा जो है ट्रेस किया जाता है टू देयर सोर्स. वेरीफाई ऑडिट ट्रेल जो यूज़ की जाती है वेरीफाई और ट्रैक करने के लिए मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ऑडिट ट्रेल्स या ऑडिट लॉग्स जो एक्ट करता है रिकॉर्ड कीपर्स की तरह जो ये एक्ट करता है that document evidence of certain events. Document करते हैं evidence certain events का procedures या operations because their purpose is to reduce for fraud,
material errors and unauthorized use. Audit trails help to enhance internal controls and data security. Help करता है enhance करने में internal control और data security. Help करता है in fixing responsibility, rebuilding events. Audit trails can help in fixing responsibility, rebuilding events, and in thorough analysis of problem areas. Audit trails help करता है fix करने में responsibility, rebuild करने में events और thorough analysis में of problem areas.